बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ 3 खास और बेहद ही खूबसूरत मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि लीवा मिस डिवा 2023 के विनर्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ओके, आप wonderful. अभी the day has just begun and we're like, okay, now it's sinking in. Yeah, we've barely been crowned and now we're actually being interviewed. So it's a different feeling. Like pinching myself to make sure that I'm not dreaming. It's happening for real. सिंस इनका ये रियल टाइम शुरू हो चुका है, हम खुद ही रिक्वेस्ट करेंगे कि तीनों अपने अपने नाम और टाइटल्स सभी दर्शकों को बताएं, जिससे कि एक बार आपको भी वो स्टेज वाला मोमेंट फिर से यहाँ पे जीने का मौका मिले। There we go. Namaste everyone. I am Shweta Sharda, the Liva Miss Diva Universe 2023. Hello everyone, I am Trisha Shetty, your Liva Miss Diva 2023 runner-up. Namaste, I am Sonal Kukreja, Liva Miss Diva Supranational 2023. Well, to begin, मतलब जो broad smiles हैं, it just gives a lot of motivation and tells us कि कितनी ज़्यादा खुशी है आप लोगों को। बहुत सारे patience और practices के बाद ये moment आया। But to start with you, जब like crown हो रहा था, that moment, of course, it is very emotional indeed. So, how was the feeling? What was going on behind your mind? Like, क्या चलने वाला है? I think that moment was so unreal. Like I couldn't even feel. Even if I'm speaking right now, I'm having goosebumps. मुझे उस टाइम पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो एक्चुअली जिस चीज़ को मैंने कहते हैं ना, एक मूवी का एक डायलॉग है, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। वही चीज़ मेरे साथ हुई। आई थिंक क्राउन को मैंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था। ईच डे मैं सोती थी वो मैनिफेस्ट करके दैट क्राउन इज़ ऑन माई हेड। मैं उठती थी वही सोचती थी कि क्राउन मेरे सर पे और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जब वो क्राउन एक्चुअली, आई थिंक वो जो जितनी भी पावर्स होती है मैनिफेस्टेशन की, आई थिंक आई एम द लिविंग प्रूफ फॉर दैट। वो एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। एंड जब मुझे क्राउन मेरे सर पे आया, मैं वो शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा था उस पर। बट ऑफ कोर्स देयर वाज फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन, स्पेशली माय मदर। वो मेरे साथ हमेशा रही हैं, बचपन से लेकर अभी तक। उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा उनका सपोर्ट रहा है। तो एक ग्रेटफुलनेस था और एक मोटिवेशन थी कि आप इस स्टेप को और आगे लेके जाना और इंडिया को प्राउड फील करवा। सो एक चीज़ यहाँ पर ये है कि मम्मा का भी सपना पूरा हो गया है। आई एम श्योर उनकी जितनी भी मेहनत थी आपके ऊपर वो पूरी सफल हुई हैं। बट मैं आप दोनों फिलहाल जानना चाहूँगी, बिकॉज आई एम श्योर आप तीनों बहनें हो गई होंगी ना, एक साथ सारी प्रैक्टिस, इंटरव्यूज़, स्टेज शेयर करना। सो आपके लिए कैसा था? बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी की चीज़ों को ध्यान देती हैं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। आप साइकोलॉजी से ग्रेजुएट भी हैं, तो जब ये सारे मूवमेंट चल रहे थे तो सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व कर रही थी कि दूसरों के एक्सप्रेशंस भी रीड कर रही थी आप? एक्चुअली मुझे वो टाइम नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाई, तभी भी नहीं कर पाई थी, आज भी नहीं कर पा रही हूँ। इट्स बिकॉज यू सी 16 एस्पिरेशनल वुमेन, राइट? दे आर ऑल एस्पायरिंग फॉर दैट वन क्राउन. And I'm glad that I get to share it with Sonal and Shweta, because we were one of those privileged ones who actually got acknowledged for our hard work, and we were thought of being worthy of the Diva family. So I think that in itself is a pride. कैसा लग रहा था? It was an unreal feeling, because मुझे audience में मेरी मम्मी दिख रही थी and I could see the tears rolling down her eye. So it's a moment that I will always cherish. सोनल, आपके लिए कैसा वो मोमेंट था? आपके आंखों के सामने क्या कुछ हो रहा था? बिकॉज यू नो, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स क्राउन के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। जितने ज़्यादा डायमंड्स हैं उसमें उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सोनल, हाउ वाज इट फॉर यू? आई थिंक जैसे आपने कहा ना, सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो मेरी आंखों के सामने थी। आई थिंक उस मोमेंट पे भी खड़े हुए, and you know, as Trisha was saying, there's 16 aspirational women standing there, एक से बढ़कर एक, because everyone is passionate about making a difference. हर कोई वहाँ पे उस सपने के साथ था। किसी का बचपन का सपना, किसी का बड़े होके, बट वो सपना सेम था। So you know, sharing that space is very beautiful. The energy where we're holding hands, but we're looking at the same thing, you know, at the end of the day.
So I think that was very special because the energy that we were sharing was so beautiful at that point, and we were pushing each other, we were motivating each other, holding hands also in the last. कि हाँ किसी को भी मिलेगा ना, we'll do justice with it. मतलब उस And I stage think- तक अपने आप को क्रेडिबिलिटी इतनी आपकी अपग्रेडेड है कि आप वहाँ पर हो. इट्स ऑलवेज अ बिग थिंग. बट यस ऑफ कोर्स मैं आपसे जानना चाहूंगी श्वेता कि डांस का आपका जो भी जर्नी है वो हम सब ने ऑन स्क्रीन देखा है. और ये हर एक हम लोग जनरली बात करते हैं कि एवरी गर्ल वांट्स टू बिकम अ डांसर. दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट नाउ व्हेन यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वांट टू शेयर फॉर योर aspirants those are making their careers in dancing and are also looking forward to such other platforms like this? जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो मेरे पास भी मेरी मॉम के अलावा कोई सपोर्ट नहीं था. तो आई फील फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है आपकी जर्नी में, बहुत कीमती रोल प्ले करता है. एंड उसके बाद मेरे पास डांसिंग एज अ टैलेंट मुझे भगवान से एक गिफ्ट मिला था. तो हैविंग सेड दैट आई से कि भगवान आपको गिफ्ट ज़रूर देता है, लेकिन उसको तराशना आपके खुद के हाथ में होता है. बिल्कुल. तो मैंने वो गिफ्ट को लिया, तो मैंने उस गिफ्ट को अच्छे से तराशा. मैंने अपने आप पे बहुत काम किया है. मैंने अपने आप को दिन के 8-8, 9-9 घंटे दिए हैं. मैंने प्रैक्टिस की है. तो फर्स्टली आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, और आपका एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं. तो मैं सब लड़कियों को, जितनी भी यहाँ पे, नॉट जस्ट लड़कियाँ, आई थिंक पूरे यूथ को मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हैव अ पर्पस इन योर लाइफ. Or manifest that, please. Because we can see the results out here very clearly. Manifestation is the key now. तो सारे work struggles एक तरफ, manifestation एक तरफ, है ना? Very true. आप लोगों के लिए मतलब belief is very important. In fact, I like whatever interviews that I have done so far, everybody just says that they have someone from the family who support them. Generally बहुत सारे cases में होता है कि the girl want to go ahead, the boy want to go ahead, but family को ऐसे support नहीं होता, तो उनके dreams नहीं पूरे हो पाते हैं. So इन्होंने बताया कि जैसे इनकी मॉम इनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थी. आपकी मम्मा के आंखों से आंसू आ रहे थे, आपकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी. तो आपके लिए वो सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा रहा है? और इसमें ये भी पूछूंगी कि कोई एक ऑब्स्टेकल जो आई हो कि आपको लगा हो कि शायद नहीं हो पाएगा, बट मैंने उसको एक साइड करके ये अचीव किया आज. तो सपोर्ट, लाइक यू सेड, सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रहा है. सिर्फ मम्मी का नहीं, पापा, भाई का. चाहे वो एक छोटा से छोटा ऑडिशन हो या ये मेरे वॉक वीडियो हो ऑडिशन के लिए, मेरे भाई ने कभी क्रिप नहीं किया. वो फ़ोन लेके, जब मैं जीती भी तो उसने बोला मैंने सबको हक किया तो उसने बोला वी आर ऑल एज अ फैमिली सक्सेसफुल टुडे. It's not all mine. Genuinely, it's not all mine. It's collective efforts. Everybody. मैंने खाया, सोया. Mama's been on the call all the time. So it's been a collective journey for all of us. But obstacle wise, I've been fortunate कि मुझे ऐसे obstacles नहीं आए जहाँ पे मुझे fight करना पड़ा. But मेरा ये जो journey है यहाँ तक पहुँचने का, ये बचपन से शुरू हुआ था. और मैं एक दिन जब कॉलेज जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 8 महीने के लिए बेड रेस्ट पे थी. और तभी मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया कि व्हाट इफ़ आई नेवर वॉक ऑन हील्स अगेन. बट इसमें मुझे ये समझ आया कि यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर to appreciate what you have, appreciate the most basic things that you have, and have gratitude and resilience. Because if you have that sort of resilience and patience, you can actually stand up on your feet and possibly win one of the crowns like we did. So that's very important. That's no matter what the obstacle is, small or big, you can sustain all of them and thrive. Right. सोनल, आप आई एम श्योर कि कोई भी मोमेंट एंजॉय करना चाहती हैं लाइफ में, यू कीप दैट एंटरप्रेन्योरशिप बैक इन योर माइंड, राइट? तो जब ये जर्नी आप सक्सीड कर रही थी इन दैट प्रोसेस, व्हाट वर योर प्लान्स कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आप क्या करेंगे आगे? व्हाट इज दैट न्यू एनर्जी दैट यू थॉट इन योर माइंड विद रिगार्ड्स टू कीपिंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप इन योर माइंड? Well, जैसा आपने कहा, I think बचपन से ही the business side of things has been instilled in me. My father actually started working when he was 6 years old, and उनकी journey बहुत ही छोटे steps से, where he would sell newspapers on the street, work at a pawn store. वहाँ से उन्हें आज जिस मुकाम पे मेरी family को, and not just my own family, he's made a difference to
hundreds of people that I now, you know, look up to, and they look up to him, and you know, that sense of respect that they have for him, I have the same, and I have always been fond of, you know, creating that space for myself also, and looking at my father and giving back, because he gave all of us everything, both my parents rather, उन दोनों की जो beginnings थी and where they are today, miles apart, right? But it starts from that step. उनमें था एक जज्बा कि चाहे अभी life जो भी है, he knew what he wanted. My dad There knew will what be he a change wanted. for sure. He, and more than a change, you know, he always says, जो मैं चाहता था जिंदगी में मुझे चाहे ना मिला, पर जो मुझे चाहिए था ना, वो मुझे हमेशा मिला. His dream once was कि, you know, I'm selling pan. Let me own a pan store. How big would that be as a dream? I'm selling it as an employee. Let me own it. You know, but now when you look back, that was a little dream which was really big for him at that point. आज जो उन्हें अपने लिए करा, उनकी family, like हम सबके लिए करा, as well as, you know, my entire family, like I think he set us up in life. Best education, best resources, best of everything. He's given us the world, and I look up to him, and I'm just like, you know, that's where I draw inspiration from all the time. So you that also it have to doesn't make matter. Similar lines of changes in your life and in Yeah. others' life as well. Exactly, and he started from that business mindset. Right. कि ठीक है, आज अगर I have 1 rupee, how can I translate that into 10 while making a difference? Because business is about not just you, but you're providing something of value. Correct. So I always, you know, strive for providing value. Even with pageantry, I think my purpose for joining was this, that, you know, I have that mindset, and I was taking on my startup, I was working in that, but I was able to reach a certain number of people. With pageantry, I thought, you know, I can really take that forward to the masses, where you're still focused on the same goal. I still have the same mission as to, you know, what I want to do with my life. I want to enable financial education for people and financial, you know, opportunities to be financially free. But now I can do that for thousands, maybe millions of people. So I want to take that mindset The forward. great ideas, the different stories, everyone has a set of different responsibilities in their own heads. But yes, now since we have the experts with us, I will just want to know the do's and the don'ts. Because, you know, there are multiple people, those who still want to run on the same path that you guys have already been working on. कि क्या कुछ करना चाहिए? Some tips from each one of you, some do's and don'ts. Should I start? Yeah, please. So there's no black and white to pageantry, but a few do's and don'ts that I've actually, you know, learned in my own journey has to be, starting off with no doubt and full belief. Two contrasting things, but you've got to learn to believe in yourself and throw your doubt away. Because when you throw fear out, that's when you achieve freedom. And when you're free, you can fully express yourself, you can perform, and I believe you can perform beyond your own limitations when you're free. So that has to be my number one do and don't. Other than that, I believe that everybody has their individual journeys. As they discover themselves and discover what's required from them, they discover their own do's and don'ts. आप बताइए आपके do's and don'ts क्या रहे हैं? So मेरा सबसे पहली चीज़ जब मेरे को कोई भी जर्नी हो, चाहे पैजेंट हो, चाहे मेरी डांसिंग जर्नी हो, चाहे कोरियोग्राफी हो, so I feel I want to advise everyone to just enjoy the moment. Just don't think about like ये आपको कहाँ लेके जाएगा, डेस्टिनेशन क्या होगा. Of course that is important too, but अगर आप आगे का इतना सोचोगे तो आप जो अभी है उसको enjoy ही नहीं कर पाओगे. Live in the आप moment. जहाँ पे हो, प्रेजेंट को एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उससे आपको एक खुशी मिलती है, इनर खुशी मिलती है और एक पॉजिटिविटी रहती है आपके अंदर एज ए ह्यूमन. सेकेंडली आई वांट टू टेल एवरीवन जस्ट टू बी ऑथेंटिक. आप आज की लाइफ में इट्स वेरी इजी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वाचिंग समवन एल्स लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी. इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड. सो just be authentic, just be true to yourself, just be honest. Whatever you are doing, no matter, just be honest with yourself. That's all I want to advise them. And yeah. सोनल आपकी क्या टिप्स होंगी? आई थिंक मेरी सबसे बड़ी एडवाइस जो होगी वो होगी कि
you know, don't be scared of failure to a point that you don't even take the first step. हम बहुत बार होता है डर से, from the fear of failing, yeah, because we don't believe in ourselves, we don't even take on the journey, even though वो हमारा सपना है, we don't take it because we, you know, it takes guts to glory. And I truly want to, you know, tell people, whoever's watching, that take that first step, have the guts to do it. चाहे एंड में आपको वो जो, you know, आपका गोल था मिले ना मिले, you will take away something way bigger and way more beautiful. I'm sure experiments just help you get more experiences in my own knowledge. But yes, of course, मैं behind the scenes में बहुत interested रहते हैं हम. So you know, ये तो ठीक है, हमने समझ लिया कि crowning कैसे हुई, वो butterfly in your tummy वाला moment हम सबको समझ में आ गया. But yes, कभी-कभी होता है ना कि आपने बहुत prepare किया है, वो walk, वो speech, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो काफी कॉमिक रही हो, मीडिया और पुट यू इन टीयर्स, ऐसा कुछ रहा आप लोगों के साथ? You know, to be very honest, I feel like we've had the best set of 16 girls this year. At no point did I feel, though it was a competition, it didn't feel like we were competing against each other. It felt like we were competing for each other. Truly. At no point was there any sort of enmity between us, any sort of competition where we felt that the other was trying to drag the other down. Not at all. Because even backstage, when we were about to start the show, I remember all the girls holding their hands and we all prayed to God together. And I think that is the power of being one. All of us considered the show to be our show and not my show or her show. It was our show. So we all held hands together and we all, whoever we believed in, right? Whichever power we believed in that power, and we said we are going to make this show a memorable one. For each one of us, for everybody who supported us and everybody who's watching us. So I think that is one of my favorite parts of the pageant. Yeah, because in my view, I could see the girls and then I could see blue lights and yellow lights and spotlights. And I was like, oh my God, I'm actually living the diva journey. The moment is here, time flew and the moment's come. And we're actually showcasing, it's a collective journey that we're showcasing to the audience. So it's going to be in my heart forever. Can't let you go without asking this question, because इस stage पर और इस pageant के बाद everyone gets different sort of opportunities to work in Bollywood, maybe on camera, off camera, right? Something, dancing, whatever. So, आप लोग किसके साथ काम करना चाहेंगे? Who would be your dream co-star or the dream director, or maybe that you want to compose in with? Yeah, let's go, girls. Yeah. I'm sure you must have dreamed of, because everyone We who have. has thought of walking on We have. carpet, उसने जरूर सोचा है कि मैं जब कोई मेरे लिए भी गाना बज रहा होगा, मैं भी शाहरुख के साथ डांस कर रहा होऊंगा, you know, सलमान के साथ धमाकेदार एंट्री. Yeah, keep saying such things, we manifest it. Yeah. Okay, so आप लोगों ने किसके साथ सोचा है? Yeah, please. So, जिसका मैं अभी नाम देने जा रही हूँ, to everyone, all the girls are sitting next to me right now. I'm sure ये नाम सुनने के बाद वो पक्का बोलेंगे, oh my God, I wanted to work with Shah Rukh Khan. आइए, स्वागत है आपका. Screen में जिसमें बहुत लंबी कतार है. My favorite movie, I think I've watched that movie already 1,000 times. Which one? Om Shanti. Wow. And of course, Deepika is looking amazing. The performance was incredible. So, if I'll get a chance, you know, to recreate that, I would love to do that. And what else? Director? जो आपकी इच्छा है आप सब बता दीजिए, बिकॉज जो वीडियो देख रहे होंगे आई एम श्योर अपॉर्चुनिटी आने में आसानी होगी. मैनिफेस्टेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा. So, my favorite, I think this one is very difficult because I look up to, like, there are 2-3 brilliant directors are there in our Bollywood industry, but I love to work with Karan Johar because of all the drama and I everything. hope Karan KJ is watching us and is ready with new scripts with him. Sunil, for all of them, okay. Sunil, आप किसके साथ काम करना चाहेंगे और किस तरीके के काम करना चाहेंगे? Because I find you like a bit, you know, that serious kind of person about their own goals in life. So yeah. Not serious, but I feel like
the journey is a little different, right? सबकी अलग है. I think मेरा जो background है उसको लेकर Bollywood is not something something that recently came on my mind. It's not something बचपन का dream जो रहा हो मेरा. So when you ask me that, as much as I've had the passion for Bollywood and the compassion, right? Because the industry, obviously, it's filled with talented people. When you call it Bollywood or like the Indian film industry, oh my God, the kind of talent that we have. And today, it goes beyond that web series ke saath and everywhere where we've taken over from OTT. Oh my God, but the kind of work that we've seen, the work of art, I truly stand for that. So मेरे लिए that'll be still exploring as to see कि मैं अपने आप को कहाँ देखना कौन चाहूँगी. से पोजीशन पे रहेंगे. हाँ. You will be behind the camera or on the camera maybe. Maybe I'm sure she will be making films and then she will cast you both. That's I better. doubt though. I think this journey has truly taught us how much we love being in front of the camera than behind. Lovely. So it's going to be difficult to go behind now. No, but with her intellect, she actually could. With her sort of intellect, she actually could. Oh, see. Well, who knows? But You I'm get the ready. points from here. I'm ready. I'm like, bring it on. Let's see क्या opportunity है. Open doors, Okay. For you, किसके साथ मतलब stage share करेंगे, screen share करेंगे? There's a long, long list. अब एक का नाम लेके क्यों अपने opportunities कम करो? No, but I have a logical favorite and a sentimental favorite. So logical favorite is Amir Khan, because whenever I watched him act, I don't understand how the man makes you believe that he's the character to an extent that you get engrossed in the film. Yeah, and then you're still thinking about it for days. So he makes you, he gets you inside the film, is why he's my logical favorite. And my sentimental favorite is Shahid Kapoor, because we have a little crush everywhere. From the days of Vivah. From the days of Vivaha to Jab We Met. Ishq Vishq, oh my God. From his transformation from Vivaha to now being this macho man. I mean, I'm in love with every phase that he goes through, and I'm waiting to see what's coming next. Nice. Good to know so many things from you. Okay, how much you miss your food? Because हर किसी को पता है कि भैया इतना slim from running के लिए you have to compromise a lot on your food and your diet. Because there was a lot of good food outside, so yeah. We're excited. Really now? Yeah. That was a motivation. Skip किया आप लोगों ने. Chocolate ice cream. I think मेरा trainer जो मुझे train कर रहे थे for this Miss Diva, I've already told him I want the crown, I wanted to do this. तो उन्होंने इतना seriously ले लिया कि उन्होंने मेरी रोटी भी बंद कर दी. I was not even eating roti. I was just surviving on 50 grams of rice, 50 grams of sprouts, and pineapple. That's it. I think I've left everything. I am the opposite of that. I am a mindful eater. तो मैं जो भी खा रही होती हूँ मैं mindfully खाती हूँ. So I think in my lifestyle only, I don't prefer a lot of things that probably will make me gain weight. So I feel I've been constant pretty much, Okay. which works. So- and I Yeah, think likewise we to shouldn't me. go too hard on this, like the whole diet side. That's my personal opinion. I feel like go easy, take it easy, but be mindful. Right. Because your body knows. So Right, apart right. from manifestation, a lot of hard work, then this diet chart, guys know, सिर्फ catwalk करके कुछ नहीं मिलेगा. That's true. That's true. That's true. That's true. Okay, It's a lastly, lot more. Your message to Gen Z that what they should be doing and what changes you are planning to do in their lives respectively. Well, I can go first. Yeah, go ahead. Well, for Gen Z especially, I feel like it's important to be curious. Be aware, be curious, question yourself, question everything that's coming your way, because I think सारे answers are हमारे अंदर, they're all within us. I feel we know the answers to what we want to do in life. We're just yet to explore ourselves. So especially for Gen Zs, and I love the fact that they're so already aware of themselves and their personalities. They're such strong personalities. Thanks to social media and open criticism and open appreciation, I must say. Of course. Also space for open dialogue about Right, so many right. different topics that have recently come up. So I love that. So be curious, be out there, explore whatever you want to. Be free to do that. And yeah, just take on life as it comes. I feel that's what we did to get to where we are,
took the opportunity that was in hand and made the best out of it. What about you? What have you learned from the Gen Z? मतलब सीखा क्या है? Because even 1 year of generation gaps brings a lot of Yeah. different mindsets. तो आपने क्या सीखा और क्या चाहते हैं आप उन लोगों से उनके लिए करना? Okay, so मैंने जो सीखा वो ये they are very, you know, they are, as like Sonu said, that they are very self-aware about themselves. I think हमारे time पे हम लोग इतने ज़्यादा aware नहीं थे. They are aware about everything. Yeah. What clothes they gonna wear, about like the specific theme. Or They like, said from personalities, Exactly, right? Whether it's yeah. style, whether it's like the way they're putting themselves across. Captions, everything. Yeah. They are so, you know, they are so well aware about themselves, like what kind of a lifestyle they wanna, you know, showcase to the world. So ये चीजें हमें नहीं पता थी कि ये हमें सीखनी चाहिए उनसे. They are very smart, you know, like what they gonna put out. Right. And what advice I'm gonna give them is like, just be, you know, grateful. Just be grateful. Just stay grounded. बताइए फिर आपको हम दोबारा कब पर्दों देखेंगे एक नई एनर्जी नया टायर के साथ? तो हम सब ने साथ में मिलकर बहुत मेहनत की है एंड विद द राइट इंटेंशन इन आवर हार्ट द ग्रैंड फिनाले ऑफ लीवा मिस डीवा 2023 विल बी एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम्ड ऑन जियो सिनेमा ऑन द 9th of September. तो देखना मत भूलिए हम सबको. वेल आई मस्ट से आप लोगों ने ये ताज अपने सर पे चढ़ा लिया है. सिंस इंडिया हैज मैनेज्ड टू रीच समहाउ ऑन चांद, हम चांद पर पहुंच चुके हैं. तो आप लोगों के लिए कैसी फीलिंग है? चांद पर पहुंचने वाली फीलिंग है कि लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे? So there's a song and there are specific lyrics. I really believe in this, and I really want to tell this to all the girls out there. This is for you. So the lyrics are, छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पल छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. वेरी नाइस. सो मस्ट से डांस के साथ अच्छी दूसरी स्किल्स भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. नहीं, So many talents. वेरी वेरी टैलेंट. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू थ्री ऑफ यू. आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत सारे टिप्स मिली हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ इनसाइड डिटेल्स मिली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स जेन ज़ी, यू मस्ट लर्न एंड एक्सप्लोर योरसेल्व्स इन दिस डिफरेंट वेज. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. Thank you.